Good afternoon. Who is this person with a strange string name? Good morning, sir. Good afternoon, sir. Person. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good morning, sir. Good afternoon, everyone. Sir. Sir. Can you hear me now? Yes. Okay, great. Okay, so let's get started. Okay, there are some students joining, so I'll just wait for a few more seconds. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. सर सर ट्रिग्नोमेट्री करा लेना एक बार. ट्रिग्नोमेट्री तो रिवाइज हमने कर ली है लास्ट वीक एक बार. सर एक बार और समझा देना, हमारे समझ में थोड़ा हल्का हल्का सा कंफ्यूज. क्या चीज समझ नहीं आई है ट्रिग्नोमेट्री में, वो बताओ, मैं वो बता देता हूँ. वरना वीडियो चेक कर लेना जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है. वो वीडियो अपलोडेड है, वो जरूर चेक कर लेना. उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं. जो चीज में डाउट है वो पूछो. कौन सा पार्ट क्लियर नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में? यस निहाल. सर पूरे चैप्टर में कंफ्यूज है, हमने सर वो पढ़ा नहीं है दोबारा से. हाँ, तो एक बार ना, मतलब ऐसे, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का वो रिवीजन हो गया है, तो एक काम करो, जो उसका वीडियो अपलोडेड है ना, अभी हमने लास्ट वीक पूरा रिवीजन किया है एक बार, और पुराने जब पहले किए थे वो भी रिवाइज, उनमें से वीडियो देख लो. अगर डाउट फिर भी रहता है ना, तो वो कल क्लास में पूछो आप मुझसे, ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ओके, यू आर वेलकम. ओके, नुपुर, शेखर, वर्षा, आयान, वीडियो ऑन करिए बेटा, फिर वी विल गेट स्टार्टेड. हिमांशु आल्सो. निहाल, नुपुर, हिमांशु. हिमांशु का ऑन हो गया है, फिर ऑफ. हिमांशु, योर वीडियो इज गोइंग ऑन एंड ऑफ. शेखर, शेखर एंड निहाल, आप ऑन करिए. ये अगेन आई डोंट नो, देयर इज वन स्टूडेंट who comes up with strange names here. Okay, and I'll remove him again. Okay, let's get started. Okay, so we'll do some questions that have appeared in the board exams for triangles. Okay, prove that the area of an equilateral triangle described on one side of the square is equal to half the area of the equilateral triangle described on one of its diagonal. Okay, now technically this question, okay, technically I would say this question may not come this year. Okay,
Because the ratio of similar areas of similar triangles are per se not in the course, right? But since it has appeared in the board, quickly let's do it. How would we do this question? It's a straightforward question. So we have a square. Okay, let's say the side of the square is A. Then the length of the diagonal is root 2 into A, right? So if there is an equilateral triangle drawn here versus the equilateral triangle drawn here, right? Then both the equilateral triangles are always similar. Okay, so the ratio of area of triangle 1 to ratio of area of triangle 2 is going to be equal to the ratio of a square of sides, which is a square by root 2 a square, okay, which is half. Okay, so it is a simple question but may not come this year. If the area of the two similar triangles are equal, prove that they are congruent. Okay, so how would we do this? Sir, by A. Sorry. I see. Yeah, so we are already given that they are similar. PQR, let's take it PQ. Okay, so given triangle ABC is similar to triangle PQR. Okay, now what does it mean? It means that AB AP upon PQ is equal to AC upon PR equal to BC upon QR, right? That's what it means. So now their areas are equal. स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कीजिए, काफी It, सारे बच्चों ने ऑफ कर रखा है, ऑन कीजिए. please switch on your cameras. Rudra, Sachin, Shekhar, Varsha, Arshita. Beta sab camera on rakhiye, please. Area ABC is equal to area triangle. Area triangle PQR. Okay, what does it mean? It means that AB square by PQ square, okay, is equal to 1. And so all ratios squares are 1, which implies AB is equal to PQ. Okay, क्योंकि negative length तो हो नहीं सकती, तो it only means positive values are same, right? So now if it means this, then it means here, right? What does it mean? That the sides are equal. So in a similar triangle, the sides are equal. Now I can say AB is equal to PQ, but we know angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q. What is the reason I will say here? See, corresponding parts, angles, I would say, corresponding angles of similar triangles. Okay, the same is the reason here. So then by which rule it will become congruent? What is the rule? ASA rule.
Okay. You could have also used all these ratios, proved all sides are equal, then by SSS rule also you could have proven congruency or multiple ways. Okay, not just one way to prove it. In an equilateral triangle is D. Okay, D is a point on the side BC such that BD is equal to 1/3 of BC. Prove this equality. Okay, how would we do this? Shimanshu, Jagrati, सर पहले तो इसमें परपेंडिकुलर डालेंगे very, very good. BC Very. So let's say we drop a perpendicular at a point E. Now what will we do? Okay, so let, सर एक्सक्यूज मी सर, काफी yeah, बच्चों ने कैमरा ऑफ रखा हुआ है, शेखर, सानिध्य, सचिन, काफी बच्चों का ऑफ है। स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज आपको रिमूव कर दिया जाएगा। Rudra, Sandhya, शेखर। शेखर, आपको कितनी बार मैंने कहा बेटा कैमरा ऑन करिए। वर्षा, वर्षा का ऑन हो गया है। सर हमारी रुद्र, नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम है? यस सर, वीडियो ऑन दिख ही नहीं रही। एक सेकंड, वो थोड़ी देर में हो जाएगी ऑन। आप उसको ऑन रखिए, वो आ जाएगा थोड़ी देर में ऑन। सर इधर से तो ऑन ही है। हाँ, पहले ऑन नहीं था, अब ऑन है, लेकिन अब आ गया। देखिए थोड़ी देर लगी लेकिन आ गया। ठीक है, पहले ऑफ था। कई बार वीडियो आने में 2-4 सेकंड लग जाते हैं। आप अपनी तरफ से उसको ऑन रखिए। शेखर, आपका नहीं ऑन हुआ है। सचिन, रुद्र, हिमांशु, रुद्र, शेखर, अर्पण। बेटा क्यों आज, एक्चुअली 10th स्टैंडर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, राइट? आज क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है? आई डोंट अंडरस्टैंड। दिस विल वेस्ट एवरीबॉडीज टाइम, राइट? Please switch on your videos. I don't want to keep you know looking after this part. You are all grown kids now, right? You are almost adults. Let one side of the triangle be A A. Okay, now how will we do this? So what we can do here is, first we will find this side, right? yes sir So A this is A by 2. Okay, so what will this side be? A square minus A by 2 square under root, which will become A by root 3A by 2, right? yes sir. Okay, so this has become root 3A by 2. And now we complete this triangle. Okay, now in this triangle, what is this length? This is half A minus 1/3A, right? So Yes. DE is equal to half A minus 1/3 A, which is 1/6 A, right? A by 6A. Right? Now, what do we have to find? AD. What is AD? Now, AD square is equal to DE square plus AD AE square. Okay, Yes. and AE was root 3 by 2.
A whole square plus A DE, by 6. A by 6 whole square. A, So, this is A, right? So anyway, we can take A square outside. What will this be? This 4 and 6, so 12 I can take here. And 3 and 2, 3, 9 no, plus uh, 2, 2, right? sir, I think that 36. This is 36 and this is, sorry, let me not do this. Okay, let me not let go of this step. 3 by 4 plus 1 by square. 36, right? Yes, sir. A square, which is 36, and this is 9 into 27 plus 1. 27 plus 1 is 28 by 36 A square, which is 7 by 9 A square. 7/9 Okay, so and A square is equals to AB. AB, AB is 2. AB square, right? So we get our answer. AD square into 9 is equal to 7 AB square. Okay, Yes. prove that the right in a right triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of squares of the other two sides. Which theorem is this? Pythagoras theorem. This is Pythagoras theorem. So how do we prove the Pythagoras theorem? So first we have to make right Sir, angle triangle, then we have to another altitude बनाना है उसमें. Hmm. sir, hypotenuse पे Right? So we will take this. hypotenuse से perpendicular बनाना. Yeah. So we have to drop this perpendicular at a point D, let's say. Okay. Now this was already a 90-degree. We create a 90-degree here. Now we will use the similarity of triangles to come up with the solution. Okay. So let's first look at the triangles Triangle. Triangle ADB, ADB and ADB, ABC. and the bigger one ABC BC. in triangles. This. Now what can we write? So AD upon AB is Angle equal to A is equal to angle A, common. Common. And angle B equals to angle ADB 90. Yes, angle B is equal to angle D, right angle. Okay. so Now, AB common. okay, Now by AB ADB, so that ADB is similar to triangle ABC. yeah Okay, by AA, AB. A rule. Similarly criterion rule. Okay, now what we can say AD. Now, which Upon AD, AD upon sir AD upon AB is equal to AB upon हाँ, तो AD upon which side? सर AB क्योंकि वो आपने उसका बेस लिया है तो हम बिगर ट्रायंगल का भी बेस राइट सो AD इसमें ये हमने AB लिया है राइट AB is opposite to the is opposite to this angle, right? Or it is the one which contains the 90-degree angle and the A angle. So the 90-degree and the A angle is AD. So AD and AB are similar. Okay. and then we will take use AB again. yes sir. Okay. But now AB is in this small triangle. So which is the hypotenuse? So it will be this, Yes. right? Now So cross multiply. Yeah.
So now we can say AB square is equal to AC into AD. Okay, now we keep this aside. And similarly, we will take the other two triangles, which are triangle BDC and ABC. BDC and triangle. सर आपने BCC लिख दिया. B, B, sorry, BDC, I would write BDC. Okay, in BDC and triangle ABC. Right? So we can prove they are also similar because angle C is common and 90 degrees are common. Okay, so let me skip writing that. So what ratios will we take now? Sir BC upon DC. Sorry. BC सर upon फर्स्ट बीसी BC. सर टीसी लेंगे ना पहले, तो सर हमने बीडीसी ट्रायंगल पहले लिया है. हाँ हाँ, तो हमने BDC लिया है, तो BC क्या है इसमें? हाइपोटेन्यूज है, राइट? फिर एसी बिगर अपॉन ट्रायंगल के. AC. अब छोटे ट्रायंगल का हम एक साइड लेंगे, कौन सा लेंगे? सर बीसी लेंगे. सर DC. BC लेंगे दोबारा से, सर सर DC. DC लेंगे, राइट? सो दैट वो BC के साथ आ जाए, राइट? तो वी विल टेक BC, बिगर ट्रायंगल का बीसी लेंगे जो उसकी परपेंडिकुलर है. right? So this will give us BC square is equal to AC into DC. सर अब both equations को ऐड कर देंगे. Now 1 plus 2 will give us AB square plus BC square is equal to, in this we can take AC as common, BC कॉमन ले लेंगे और AD plus DC बचेगा. AD plus DC, which is actually equal to AC, so this AC. becomes AC square. AC square. Okay, Yes sir. let's do this one. निशांत तिवारी, रुद्र शर्मा, सचिन शर्मा, शेखर एंड सर ये वर्षा, BP. सबका वीडियो ऑफ है. सर ये BPT थ्योरम से हो जाएगा. Yes. So how will we do that? सर पहले हम इन ट्रायंगल ए बी ई में देखेंगे, तो सर डी एफ पैरेलल टू ए ई होगा, तो फिर हम बाय बीपीटी रेशियो is equal to BD upon AD हो जाएगा. और सर ऐसे ही हम ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो इसमें दे रखा है DE पैरेलल टू C सॉरी AC, तो उसमें BE upon EC is equal to BD upon AD हो जाएगा. सर दो इक्वेशन बन जाएंगे, उससे इक्वल हो जाएगा BF upon F is equal to BE upon EC. यस, ओके. तो हम इसमें ये यूज कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो आर्म है ए बी, ओके, ये दो ट्रायंगल्स में यूज हो रही है, एक तो ए बी ई में और एक ए बी सी में, राइट? तो हम ये वाला जो लाइन है बी एफ, ये इसमें पैरेलल टू बेस है, और DE जो है वो बिगर ट्रायंगल में पैरेलल टू बेस है, एंड दैट इज व्हाट वी आर यूजिंग. वी आर इक्वेटिंग द ratios back to this both the times, right? So in triangle B AEB, let's take AEB, okay, in this triangle we can say that BD by BF is equal to DA by FE. Okay, or to keep life easy, we can write it the other way around also. Both are allowed, right? So we can actually use this BF by FE is equal to
BD upon BF by FE is equal to BD upon DA, right? Similarly, in triangle ACB, we can again say BE upon EC, EC is equal to BD upon D D, upon DA. right? So in दोनों equations से both are equal to the same thing, so we can say BF on FE is equal to BE on EC. Okay. So okay, let's move on. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow of 4 meter long on the ground. At the same time, a tower casts a shadow of 28 meter long. Find the height of the tower. Okay. So there is a pole of length 6 meter. It casts a shadow of 4 meter. Then there is a shadow of 28 meter by another pole. Okay, we don't know that height. Okay, so how will we find the height of this? The thing is, it's the same time of the day. So it means that this angle is the same. Okay, the angle of the elevation is the same, right? This is the line going to the sun. Okay, it is the same, right? And this is 90 degree. So they are similar triangles. If they are similar triangles, then the sides are in the same ratio. So this is 7 times bigger. So this will also be 7 times bigger, which is 42 meters. 6 upon 4 is equal to X upon 28. Absolutely. Will be 42 meter. 6 into 7. Okay? Yes. Okay. How will we do this? O is any point inside a rectangle ABCD as shown in the figure. We have to prove this equality. Okay, so given the fact that everything is a square here, that gives us a hint that what theorem is likely to be used in this? So Pythagoras. Yes. So most likely Pythagoras theorem is going to provide us the solution. But Simran, Himanshu, रुद्र, शेखर, सुमित, आप सबके, अर्पण शर्मा, आप सबके वीडियोस अभी भी ऑफ हैं. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. सो वी नीड टू क्रिएट. अभी हम सर हमने ड्रॉ करेंगे ना लाइन एक. Yes, because we have to create right angle triangles, right? अभी हमारे पास नहीं है, तो let's say we can draw a line which will create right angle triangles, right? So let's say I draw a line like this. Okay, so I can say that this line is meeting at E and F. Now this is a 90 degree, right? पैरेलल ड्रॉ करेंगे ना. Sorry? या परपेंडिकुलर. हाँ, ये perpendicular है. That has to be at a 90 degree. So O से we have drawn a line which is parallel to AD and BC, which will cut these perpendicularly, right? तो हमें हमारे सारे triangles जो हैं अब ये हर एक में कोई ना कोई हमें मिल जाएगा. यहाँ पे मिल गया और यहाँ पे मिल गया. ये
हमें इससे मोस्ट लाइकली हो जाना चाहिए, राइट? सो लेट्स ट्राई एंड डू दैट. We will just write what all of these are. Okay, so we will say OA square is equal to OA OF square, AF square. OF square plus AF square. Similarly, OB square is equal to OF square OF plus square plus BF BF square. square. Similarly, OC square is equal to OE OE square plus square, AC square. C square. Okay, just a second. Let me write it as CE. CE square and OD square is equal to OE square plus DE square. Right? Now we need to get OB square plus OD square. तो सर OB हम जो square plus सेकंड OD, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं. Right? So OB square plus OD square is equal to OF square plus BF square plus OE square plus DE square. Right? Yes sir. और सर अब दूसरी इक्वेशन बन जाएगी OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ, वो करने की स्क्वायर. जरूरत नहीं है because we will start from one side and try to produce the result of the other side. यस सर. ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? सर हम OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर की जगह. हाँ, अब क्या है, जो DE है, ठीक है ना, DE हमने लिखा है, राइट? DE इज सेम एज AF. यस सर. यस सर. ओके, सो इसकी जगह हम AF स्क्वायर लिख सकते हैं. उसी तरह से BF की जगह हम CE लिख सकते हैं, right? Now I can write the OF on this side and I can write the OE on this side. We have, so okay, let me not do that because we are preparing for exam. So let's write it the way we will write it in the exam. Okay. So in the bracket, we will give reason. What will be the reason? DE is equal to AF and BF is equal to CE. is equal to CE. Okay, opposite sides of a triangle or of a rectangle. Okay. Now this we have done. Now what will we do? We will just rearrange our terms. OF के साथ हम क्या रख लेंगे? AF रख लेंगे. AF तो सर OA स्क्वायर आ जाएगा. प्लस और CE के साथ OE रख लेंगे. एक्सक्यूज मी सर. हम्म. सर ये आपने जो ये लिखा है DE इक्वल्स टू AF, सर ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल थोड़ी होगा, ये तो स्क्वायर बन जाएगा ना, क्योंकि हमने इसे परपेंडिकुलर ड्रॉन करा है. नहीं, रेक्टेंगल ही है ना ये. देखिए DE और AF ये एक रेक्टेंगल है ना. All the angles are 90 degree in this. These were already 90 degree. हमने भी 90 degrees बनाए. ये कोई सेंटर थोड़ी ना है. वो तो मतलब इक्वल तो these sides are equal तो given नहीं है ना कुछ भी. तो रेक्टेंगल ही है अभी भी है. In the figure, it might be looking like a square, right? But it is, there is no proof, and it is not a square. It could be anything. It might be a square, may not be a square, right? Yes, So, अब OF square plus AF square हमें पता है. OF square plus AF square is OA square. OA square. Okay, and C square plus OE square जो है, OC square. C square plus OE square is OC square. तो LHS is equal to RHS and proved. Right? यहाँ से शुरू, right? So this is done. Understood?
So Yes, इसमें sir. जो मेन है एक्चुअली इट्स अ इजी प्रूफ द व्हाट आर द क्रिटिकल थिंग्स इन दिस. पहला तो ये है कि you have to get a hunch कि this will be done by Pythagoras theorem. ठीक है. The second important hunch you need to, which is the difficult one, is to think of a construction which will give us the perpendiculars, right? वो important part है इस question में, otherwise it's not a very difficult question once you get it. Okay, just give me 1 second. I'll move to the next question in a bit. Okay. So these were the questions I had on the triangles. Let's do a couple of LCM and HCF questions. That was another topic people wanted to do. The word problems on LCM and HCF. Kamal has 6 cans of regular soda and 15 cans of diet soda. He wants to create some identical refreshment tables that will operate during the American football game. He also doesn't want to have any sodas left over. What is the greatest number of refreshment tables that Kamal can stock? सर एलसीएम लेंगे इनका. इनका LCM लेंगे. LCM. तो उससे कैसे होगा? See, what is else? इस तरह हमें ये तो आइडिया है कि एलसीएम या एचसीएफ से होना है क्वेश्चन, राइट? बिकॉज इट इज इन दैट सेक्शन नाउ वी आर डिस्कशन. नाउ इसमें एलसीएम यूज होगा या एचसीएफ? दैट्स द ओनली थिंग वी हैव टू फर्स्ट थिंक ऑफ. सर इसमें एलसीएम होगा क्योंकि हमें जो सोडा है उसकी एक भी बॉटल मतलब रहनी नहीं चाहिए. तो अगर हम एचसीएफ लेंगे तो उसमें सिर्फ कॉमन कॉमन आ जाते हैं. तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि उसको आप सोचिए कि उसको ये रिफ्रेशमेंट टेबल्स लगाने हैं, उस पे उसको कुछ डाइट सोडाज रखने हैं और कुछ नॉर्मल सोडाज रखने हैं और वो आइडेंटिकल होने चाहिए सब, राइट? तो हम क्या चाहते हैं कि जितने हम ये स्टॉक्स उठाएं उतने ही हम ये वाले स्टॉक्स उठाएं. समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये x नंबर ऑफ टेबल्स हैं यहां पे, इस तरह समझिए, ठीक है ना? और हम क्या चाहते हैं कि जो एक टेबल पे डाइट सोडाज हैं, ओके, दैट इनटू x इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सोडाज, और जो नॉर्मल सोडा है इनटू x इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सोडाज. तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में x कॉमन है, राइट? एंड वी वांट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दिस x. हम सबसे ज्यादा ऐसे टेबल्स चाहते हैं. सो इट इज एन HCF क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज HCF ऑफ 6 and 15? सर 3. सर 3. 3 है, ठीक है. तो अगर 3 है तो वो ऐसी 3 टेबल्स लगा सकता है. उसमें कितने कितने रखेगा वो? इसके 2 रखेगा, इसके 5 रखेगा. तो his 3 tables will look like this, and there will be 5 diet sodas. Okay, let me show diet sodas by a circle and this by a rectangle, right? तो ऐसे इसके टेबल्स लग जाएंगे. इससे ज्यादा टेबल्स वो लगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि if he wants to make it 4 or 5 or 6 tables, that's not possible. कोई ना कोई चीज खाली रह जाएगी. You understood why this is an HCF question? यस सर. ठीक है. दूसरा,
मतलब मान के चलिए कभी समझ आ ही नहीं रहा, आप एलसीएम लेंगे इट विल बी अ बिगर नंबर, ही कांट हैव मोर टेबल्स